नमस्ते ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। चार्ट है बायोकॉन का, टाइम फ्रेम है डेली। लेट्स चेक इट आउट हाउ डू वी वर्क ऑन दिस। इफ़ यू रिमेंबर पिछले से पिछले वीडियो में मैंने एक पजल डाला था दैट वाज रिलेटेड टू बायोकॉन। आई थिंक आवरली था या 15 मिनट्स। उस पर मैंने एक पजल डाला था कि यहाँ से ये इस पॉइंट से ये वेदर इट्स प्लानिंग टू गो अप और डाउन। Now let's see how do we catch these kind of moves. Today is 7th August, Thursday, and let's check it out. How did it work for the past 1 week? ये एरिया आता है, पिछला रेजिस्टेंस है, which is formed in the month of September, January 25, Feb 25, and here we are in the month of July. हर बार ये इसी रेंज पे सब रेजिस्टेंस लेता है, which is around 390 to 403. ये 10 से 12 पॉइंट का रेजिस्टेंस जोन है. व्हेन इट स्टार्टेड respecting or rejecting the levels, let's also respect that level and try to work accordingly. अब यहाँ पे इसने इतने बड़े बड़े विक्स बनाए. जनवरी में इसने बड़ा सा engulf किया and every time sellers got active, showing us a clue, giving us a clue, saying that okay, we are about to take this stock down. All right, so now if we come to July, here it's a biggest clue given by these wicks. Every wick has a story behind it, provided आप उसको पढ़ पाओ. अभी हम आपको अगर बोल रहे हैं यहाँ पे wick है, immediately if you take the short trade or any kind of trade, the other day neither you are up nor you are down much. So these are the candles which confuse you sometimes. So how do we try to analyze these kind of stocks? Let's see. 16 जुलाई से 31st जुलाई तक इसने almost consolidate किया. It was a huge consolidation zone of about 15-20 days. राइट, अब 15 डेज का सॉरी. अब यहाँ पे अब अगर हम देखें 31st जुलाई को, नाउ द प्रोसेस विल बी कन्वर्टेड इनटू शॉर्टर टाइम फ्रेम. लेट्स टेक इट इनटू 30 मिनट्स में 31st जुलाई इज द डेट. सॉरी, सो 31st जुलाई यहाँ पे आता है. कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस ओवर के बारे में बताया. सो दिस इज 50 EMA एंड दिस इज 200 EMA. SMA EMA दोनों आप ले सकते हो, इट्स कम्प्लीटली योर विश. अब whenever this 50 crosses or cuts 200 on daily time frame, yes, we should be cautious. Now अगर 30 minutes में भी आता है तो how do we work? We know that on the daily time frame 31st July was the cautious area. Now we have to be super cautious because this is the high level candle of sellers. Now this is consolidation and it's another a big red. So now if we see, यहाँ पे हमारा crossover हो चुका है, proper crossover है. So we should be cautious enough कि यहाँ पे करना क्या है. Now if you see, this is the candle which is a great clue providing. इसको बोलते हैं shooting star. Shooting star forming at the resistance, forming below these indicators are good enough to understand where are we going to move. Now if we see, this is 4th August and 4th August से if we see in the percentage till yesterday, इसने almost 7.25% का move दिया है. So this is how you need to catch the beautiful moves, taking different indicators or very simple resistance zones, support zones and few crossovers which I can tell you. This way you can catch a very simple move in a simple manner. No lot of analysis to be done, no lot of indicators to be used. Make it simple, make it easy and have patience to work with it. Alright, this is Manisha signing off for now. See you soon tomorrow with a new video and a new learning. Stay tuned. Bye bye. Take care. Jai Hind.